So hello boys and girls, welcome back to another tutorial of Ajinkyaarts. I am your friend Ajinkya. Let's get started. सबसे पहले तो आपको 2-2 सेंटीमीटर्स की लाइन बनानी है. डॉट्स को मार्क कर लीजिए 2-2 सेंटीमीटर से. तो आपको 10 कॉलम्स और 10 रो बनाने हैं 2-2 सेंटीमीटर के इंटरवल से. After making a grid, let's move on to our next part of video, that is outline. सो आपको आई को मार्क करना है. जैसे ये वाले पोर्ट्रेट में आई की मार्किंग 4 पे और 6 पे आ रही है, तो हम पहले आउटलाइन ड्रॉ कर लेंगे और उसको फिर ज्वाइन कर लेंगे. तो ये वाला वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है. इसमें हम रॉकिंग स्टार यश की आउटलाइंस और ग्रिड मेथड का यूज़ करके पोर्ट्रेट कैसे ड्रॉ करते हैं ये जानेंगे. और स्टार्ट करते हैं हाइपर रियलिस्टिक पोर्ट्रेट ऑफ रॉकिंग स्टार यश. सो लेट्स मूव टुवर्ड आवर नेक्स्ट पार्ट ऑफ आवर वीडियो. Let's make our outline. So मैंने ये आउटलाइन ड्रॉ कर ली है. आपको भी मेरी तरह ड्रॉ करना है. मैं रेफरेंस इमेज को मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए. अभी ये ड्रॉ होने के बाद आपको मैकेनिकल पेंसिल से आपको आई को डार्क करना है. उसके बाद ये टेक्सचर्स ड्रॉ करना स्टार्ट करना है. टेक्सचर ड्रॉ करते हुए काफ़ी लोग ज़्यादा ब्लेंड करते हैं. ज़्यादा ब्लेंड नहीं करता है, हल्के हाथों से पेपर स्टम्प का यूज़ करके ब्लेंड करना है. So we have completed eye of our portrait. Let's move on to our next part, skin texture. अभी मैं स्किन के टेक्सचर ड्रॉ करना स्टार्ट कर रहा हूँ. आपको भी रेफरेंस इमेज को देख के लाइन टू लाइन ड्रॉ करना है स्किन के टेक्सचर के लिए. काइंडली ऑब्जर्व द डिटेल हाउ आई ड्रॉ. बस आपको पूरा वीडियो देखना है और मुझे ऑब्ज़र्व करके जैसा मैं ड्रॉ करता हूँ वैसे ही आपको भी ड्रॉ करना है. अगर मेरे साथ ड्रॉ करोगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा इजी जाएगा. सो लेट्स मूव. When we are drawing a skin, you have to focus on some pores and texture of skin. Kindly observe the detail and draw it carefully. स्किन टेक्सचर के लिए पोर्स को ज्वाइन करेंगे और लाइन जैसा टेक्सचर हमें रेफरेंस में इमेज में दिख रहा है वैसा ही टेक्सचर ड्रॉ करेंगे. इसको काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है. ये वाले पोर्शन को बनाने में करीबन मुझे 4 घंटे लग चुके हैं. आपको भी काफ़ी ज़्यादा टाइम देना है. आप पेशेंस के साथ ड्रॉ कीजिए स्किन टेक्सचर को. जस्ट मैं इसको स्किन टेक्सचर की लाइंस ड्रॉ कर रहा हूँ और उसके बाद उसको ब्लेंड कर रहा हूँ. हाईलाइट हम लास्ट में करेंगे. अगर आप पेशेंस के साथ ड्रॉ करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा ईजी जाएगा आपको. So without wasting our time, let's move to the next part of the tutorial. कैमरे में कई जगह मेरा हेड आ रहा होगा तो उसके लिए सॉरी.
सो ये जो डार्क शेड्स है मैंने 3B पेंसिल का यूज़ करके ड्रॉ किया है, फिर उसके बाद उसको ब्लेंड किया है पेपर स्टम्प का। और पेपर स्टम्प हमेशा क्लीन करते रहिए। In the sky, gazing far into the night, I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you. सो यहाँ तक होने के बाद अब पार्ट 2 के लिए आपको कल वेट करना पड़ेगा। इसका पार्ट 2 कल अपलोड होगा।
बस ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए और चैनल के नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे जाके फॉलो कर दीजिए। मिलते ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।